Good morning, friends. Hello, I am Anup sir. Today we are going to start our chapter number 12, sound. Now, today we will give the introduction of the sound. First off, we have seen to the here production of the sound. How sound is create or produce. Sound is produced due to the vibration of the objects. When any object vibrates, then sound create. Vibration is the rapid to and promotion of an object. Vibrating objects are the source of all sound. Irregular chaotic vibrations produce noise. Regulars controlled vibration can produce music. All sound is a combination of pure frequencies. A stretched rubber band when plugged vibrates and produce sound. जब भी आप क्या करोगे, रबर पे स्ट्रेच करोगे तो बेंड करके उसको पिकअप करोगे तो क्या प्लग करोगे तो क्या वाइब्रेट जनरेट होगा. मीन्स साउंड इज द प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. जब ऑब्जेक्ट यानी वाइब्रेशन होता है तो साउंड क्या होता है, प्रोड्यूस होता है, क्रिएट होता है. नाउ वी हैव टू सी द प्रोपगेशन ऑफ साउंड. तो फर्स्ट ऑफ when an object vibrates the particular around the medium vibrates. Object vibrate होता है, particular around the medium vibrates. The particular in contact with the vibrating objects is the first displaced from its the equilibrium position. The distance produced by the vibrating body travels through the medium, but the particles do not move the forward themselves. A wave is disturbance which moves through a medium by the vibration of the particles of the medium. The sound is considered as a wave. Sound wave require medium for transmission. Sound wave are called the mechanical waves. So first of waves are generally two types, which is first is mechanical waves and another is non-mechanical waves. I ask you question, which is called the mechanical waves. The answer is in which wave have to need medium for passes is called the mechanical waves. जो mechanical wave होती है उसको passes होने के लिए क्या मीडियम की ज़रूरत होती है, तो उसे क्या कहते हैं, mechanical wave कहते हैं. और जिन साउंड वेव को जिस वेव को मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, they have do not need to medium for passing is called the non-mechanical wave. So sound waves have to need a medium, so it is called the mechanical waves. Okay. When a vibrating object moves forward, it pushes and compresses the air in front of the forming a region. High pressure is called the compression. When the vibrating object moves backward, it forms the region is low pressure called the refraction. Now we have to see here the refraction and the compression in the given in the figure. Okay. A vibrating object produced a series of the compression and the refraction. In these waves, the particles move back and forth parallel to the direction of propagation is called the disturbance. Such waves are called the longitudinal waves, which is called the longitudinal waves. There is another kind of wave called transverse waves. In these waves, the particle oscillated up and down perpendicular to the propagation the direction of the disturbance. Sound propagates in the medium as a series compressions and the refraction. Compressions are the regions of high pressure and density where the particles are crowded and represented by the upper portion of the curve called the crust. जो upper portion है उसको क्या कहते हैं, crust कहते हैं, which is called the portion is the curve called the crust. Rarefaction of the regions low pressure density where the particles spread out and represented by the lower portion is called the curve called the trough. Trough and crest. अपर पार्ट को क्या बोलते हैं, crest बोलते हैं, लोअर पार्ट को क्या बोलते हैं, trough बोलते हैं. We have to see here in the figure, it is a upper part, and it is a lower part.
upper part is called the crest, it is called the crest, which is it is called the crest, and it is called the lower part is called the it is called the trough, it is called the trough. Okay, upper part called the crest and lower part is called the crow during the condensation on refraction as seen in the figure. The time period of sound wave frequency and the time are represented as the follows. V are the one oscillations, T is equal to 1 upon B or V is equal to 1 upon T. It is the formula. Okay, to time period, it is for the velocity. Amplitude, the sound waves is the height of the crest and toe. Height of the crest and toe, it is represented in the letter A. It is a crest and it is a toe. It is a toe and it is a wavelength. Distance between the two crest is called the wavelength. Okay, distance between the two crest is called the wavelength. Here it is a two crest. The distance between the two crest is called the wavelength. The wavelength is the distance between the two crest or two waves and the next of each other. The amplitude is high, low, high and crest are. Okay, pitch and the loudness of the sound we have to see in here. The pitch of the sound, shrillness and flatness depends on the frequency of the vibration. किसके ऊपर डिपेंड करता है? Frequency of the vibration. If the frequency is high then the sound has high pitch. Frequency high होगी तो साउंड की जो पिच होगी क्या होगी? हाई होगी. फ्रीक्वेंसी लो होगी तो साउंड पिच क्या होगी? लो. ओके, frequency high then the sound pitch high and frequency is low then sound pitch is low. Now we have to see in the speed of sound. The speed of sound is more in solid. Solid में सबसे ज़्यादा होती है, less in liquids and least in gas. साउंड की जो स्पीड होती है सॉलिड में सबसे ज़्यादा होती है, उससे लेस लिक्विड में होती है और सबसे कम किस में होती है? गैस मीडियम में होती है. द स्पीड ऑफ द साउंड आल्सो डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ द मीडियम. मीडियम के टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है स्पीड ऑफ साउंड. द टेम्परेचर ऑफ द मीडियम इज मोर, द स्पीड ऑफ साउंड इज मोर. जो टेम्परेचर मीडियम का ज़्यादा है तो साउंड भी ज़्यादा क्रिएट होगा. ठीक है, तो साउंड की जो स्पीड है सबसे ज़्यादा किस में होती है? सॉलिड में होती है, उससे कम लिक्विड में होती है और सबसे कम गैसियस फॉर्म में होती है. और जो साउंड स्पीड है तो किस पे डिपेंड करती है? आल्सो टेम्परेचर ऑफ द मीडियम पे डिपेंड करती है. अगर टेम्परेचर ऑफ मीडियम इज ज़्यादा है, मोर, देन द साउंड स्पीड इज आल्सो मोर. नाउ वी हैव टू सीन द रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड. द साउंड get reflected at the surface of solid or liquid as flows or the law of reflection. The angle of the incident is equal to the angle of the reflection. That means I is equal to R. I is equal to R. Angle of the incidence is equal to angle of the reflection. I means incidence, R means reflection. दोनों का एंगल क्या होता है? इक्वल. एंगल ऑफ द इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल. The next one is the incident ray, reflected ray and the unit normal lies in the same plane. Incident ray and reflected ray and normal lies in the same plane. It is the both are the law of the reflection we know as well as. How many law of the reflection? There are two law of the reflection. First is the angle of incident is equal to the angle of the reflection. That is the, and another is incident ray, reflected ray and normal lies on the same plane. Now we have to see about the echoes. If we shout or clap near a reflecting surface like tall building or mountain, we hear the same sound again. अगर कोई हम माउंटेन के पास खड़े हैं या कोई बड़ी बिल्डिंग के पास खड़े हैं तो वहाँ पे हम क्लैप करते हैं, साउंड करते हैं तो सेम साउंड हमें आफ्टर सम टाइम सुनाई देता है. दिस इज कॉल्ड द इको. द साउंड विच वी हियर is called the echo. It is the cause due to the reflection of the sound. ये क्यों होता है? Due to the reflection of the
साउंड इको जनरेट होता है ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड. टू हियर द इकोस द टाइम इंटरवल बिटवीन द ओरिजिनल साउंड एंड द इको मस्ट बी लीस्ट 0.1 सेकेंड. जो टाइम इंटरवल होता है 0.1 सेकेंड से भी कम होता है जब इको सुनाई देता है. सिंस द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, स्पीड ऑफ साउंड एयर में क्या है 344 मीटर पर सेकेंड एंड डिस्टेंस ट्रैवल sound in 0.1 second means 344 meter per second into 0.1 means 34 into 0.4 meter. So to hear the echo clearly in the medium distance, the reflecting surface should be half this distance, that be 17.2. तो इकोस के लिए कम से कम डिस्टेंस कितना होना चाहिए 17.2 डिस्टेंस होगा तो ही इको सुनाई देगा. ठीक है. साउंड वेव जो है वो ठीक है एयर में उसका जो स्पीड है वो 344 मीटर पर सेकेंड है. ओके. तो विच इज कॉल्ड द इको if we shout or clap near the reflecting surface like the tall building and mountain, then we hear same sound again. This is called the echo. The main reason of echo is reflection of the sound. Okay, I hope you understood very well. If anybody have any query regarding this topic sound, then ask me on comment box. Now we have to see in reverberation. Echoes may be heard more than once due to the repeated or multiple reflections of sound. Echoes more than one times भी सुनाई देता है from the several reflecting surface. This cause the persistence of sound called the reverberation. persist मतलब आपको क्या है रिफ्लेक्टिंग रेस बार बार आ रही है. In the big hall, जो बड़े हॉल में आप एक बार चिल्लाओगे 3-4 बार साउंड रिपीट होता है. That is called the reverberation of the echoes. In the big halls, the auditoriums, to reduce the reverberation, the roof and wall are covered by the sound absorbing materials like the compressed fiber boards, rough plaster of the draperies. जो सिनेमा हॉल्स होते हैं तो उनमें ये सब क्या इंस्ट्रूमेंट लगाए जाते हैं ताकि इकोस जनरेट ना हो बार बार. ओके. यूज ऑफ द मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड. What is the use of the multiple reflection of the sound? We have to see in here. Megaphones, horns, musical instruments like trumpets, etc. are designed to send sound by the multiple reflection in a particular direction without spreading in the all direction. जो ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं तो इनका साउंड होता है क्या स्प्रेड नहीं होता है तो पर्टिकुलर जितना साउंड जनरेट होता है वो पर्टिकुलर एरिया में होता है. डॉक्टर्स लिसन टू साउंड फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी थ्रू द स्टेथोस्कोप. जो ह्यूमन बॉडी से जो डॉक्टर साउंड सुनते हैं लिसन करते हैं किस विच इज द इंस्ट्रूमेंट स्टेथोस्कोप. द साउंड ऑफ हार्ट बीट्स रीच टू द डॉक्टर ईयर बाय द मल्टीपल रिफ्लेक्शन. तो हार्ट बीट से स्टेथोस्कोप से डॉक्टर क्या कर सकता है लिसन कर सकता है. जनरली द सीलिंग ऑफ सिनेमा हॉल्स एंड ऑडिटोरियम्स आर कवर्ड सो दैट द साउंड आफ्टर द मल्टीपल रिफ्लेक्शन रीच ऑल द पार्ट्स ऑफ द हॉल. Sometimes the covered sound word is placed behind the stage so that the sound after the multiple reflection sound evenly across the whole range of the hearing. We have to see, and that is a very important question and asking all competitive exams also or also useful in all standard. Human beings can hear sound frequencies between 20 hertz to 20,000 hertz. Sorry, here it is a mistake. Here is 20,000, not 200. 20,000 hertz. Sorry, here it is a mistake. 20,000 hertz. 20,000 hertz. So human beings can hear the sound frequency between the 20 hertz to 20,000 hertz. 20 hertz to 20,000 hertz. Sound wave frequency less than 20 hertz is called the infrasonic sound. जिसकी साउंड वेव कितनी है 220 हर्ट्ज से कम है उसे क्या कहते हैं इंफ्रासोनिक साउंड कहते हैं. तो ये जो साउंड है कौन प्रोड्यूस कर सकता है और लिसन कर सकता है तो देयर आर ब्लू व्हेल एंड एलिफेंट. एलिफेंट ब्लू व्हेल इंफ्रासोनिक साउंड को प्रोड्यूस भी कर सकती है और उसको लिसन भी कर सकती है. साउंड हुज फ्रिक्वेंसी इज
frequency is more than, sorry 2000 नहीं है, यहाँ क्या आएगा 20,000, more than 20,000 hertz is called the ultrasonic, is called the ultrasonic waves. Ultrasonic waves can be listened or produced by the dog, cat, vet, it's extra. Okay, again I explain you the range of the hearing. It is a very important question for all exams. Human beings can hear sound frequencies between 20 hertz to 20,000 hertz, 20,000 hertz. A sound wave frequencies if is less than 20 hertz, then human cannot be listen. It is known as the infrasonic sound. Infrasonic sound can be produced and hearing by the bluebell and elephant. Sound whose frequency is more than 20,000 hertz is called the ultrasonic waves. These waves produced and listened by bat, dog and cats, such as animals. Ultrasonic waves also used in a sonar system, sound, navigation and ranging. Now we have to see the use of the ultrasonic sound. There are major use of the ultrasonic sound also in medicals. Ultrasonic sound is used to clean objects like electronics components. जो इलेक्ट्रिकल वॉच होती है, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स होते हैं, उनको क्लीन करने के लिए अल्ट्रासोनिक साउंड का यूज होता है. यूज टू द डिटेक्ट द क्रैक्स इन मेटल ब्लॉक्स. यूज टू अल्ट्रासाउंड स्कैनर्स फॉर गेटिंग इमेज और इंटरनल ऑर्गन्स of such human body, used to the break small stones formed in kidneys into the fine grain. जो किडनी में स्टोन होता है उसको ब्रेक डाउन करने के लिए भी अल्ट्रासोनिक साउंड का यूज होता है. ठीक है, और जो स्टोमक में कोई प्रॉब्लम हो तो उसको भी जानने के लिए किसका यूज होता है, अल्ट्रासोनिक साउंड का होता है. नाउ वी हैव टू स्टडी अबाउट द सोनार, साउंड, नेविगेशन एंड रेंजिंग. सोनार सिस्टम, we have to hear seen. It is the device which is the ultrasonic waves. सोनार सिस्टम में कौन सी वेव यूज हो रही है, अल्ट्रासोनिक. टू मेजर द डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड द स्पीड ऑफ द अंडर वाटर ऑब्जेक्ट. वाटर के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट है उसका डायरेक्शन, डिस्टेंस, स्पीड सब हम नोन कर सकते हैं. द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन बी कैलकुलेटेड बाय द knowing the speed of the sound of the water and the time taken between the transmission and the reception of the ultrasound. T is equal to P1 speed from the object, speed from the reflection by 2. Okay, it is the formula to find out the time using in the sonar system, B1 plus B2 by 2. Now we have to see here the structure of the human ear. So ear have a outer drum, eardrum, ear canal. Okay, after middle ear, extraction tube, inner ear. Okay, we have to see the structure of the human ear. The sound waves passes through the ear canal to a thin membrane is called the eardrum. जो ईयर कैनाल के पास जो थिन मेम्ब्रेन होती है उसको कहते हैं क्या, ईयर ड्रम कहते हैं. इसको हिंदी में क्या कहते हैं, कान का पर्दा. तो इस पे जब भी साउंड जनरेट पड़ता है साउंड, तो ठीक है, तो ये क्या वाइब्रेट होती है, तो उससे हम क्या लिसन करते हैं. ओके, द साउंड वेव पासिस थ्रू द ईयर कैनाल टू ए थिन मेम्ब्रेन इज कॉल्ड द ईयर ड्रम. द ईयर ड्रम वाइब्रेट्स, मैंने बोला साउंड उस पर जब भी पड़ता है तो ईयर ड्रम का तो वाइब्रेट होता है. द वाइब्रेशन आर एम्पलीफाइड बाय 3 बोन्स और द मिडल ईयर्स के जो 3 बोन्स है, हैमर, एनविल एंड स्ट्रेपिस. हैमर, एनविल एंड स्ट्रेपिस. जो स्ट्रेपिस है वो सबसे स्मॉल बोन्स बॉडी का सबसे स्मॉल बोन्स कौन सा है, स्ट्रेप. Okay, it is the smallest
bones of human body step present in inner ear. Middle ear then transmit the sound waves to the inner ear. The brain then interpreted the signals as a sound. तो साउंड जनरली के हाउ वी हियर द साउंड, तो साउंड वेव पासिस थ्रू किससे हो रही है, ईयर कैनाल से हो रही है। ईयर कैनाल से होकर जो थिन मेम्ब्रेन है दैट इज कॉल्ड द ईयर ड्रम, ईयर ड्रम पे पड़ रही है। तो ईयर ड्रम पे क्या हो रहा है, वाइब्रेशन जनरेट हो रहा है। तो वहाँ पे क्या एम्पलीफाइड हो, 3 बोन्स है मिडिल ईयर में, इज कॉल्ड द हैमर, एनविल एंड स्ट्रिप। तो मिडिल ईयर क्या कर रहा है, उसको ट्रांसमिट साउंड वेव को इनर ईयर में कर रहा है, और इनर ईयर से किस में जा रहा है, ब्रेन में जा रहा है, और ब्रेन क्या कर रहा है, उसको इंटरप्रेट कर रहा है द सिग्नल है जो sound. If anybody have any query regarding the sound, then ask me in comment box. Now it is the introduction of sound. I hope you well understood about the sound. Here we take each and every topic surrounding the sound, which is called the crest, okay, which is called the wavelength, okay, and which how to propagate the sound, how to produce the sound, okay, speed of the sound, reflection of the sound, echoes, how to generate reverberation, use of the multiple reflection of sound, range of the hearing, use of ultrasonic waves and sonar system. If anybody have queries, then ask me on comment box. Have a nice day.